मैम स्टार्ट होगी है। ठीक है, तो since this is your last class today, we would discuss your question papers. तो आपके जो question papers 2019 और शायद 20 में जो आए हैं, ये नवंबर 2019 का question paper है, that we can begin with. इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा क्योंकि आपके एग्जाम्स जो हैं वो probably ऑफलाइन होंगे, ऑनलाइन भी होंगे तो भी पैटर्न सेम रहता है, जिस दैट ऑफलाइन में थोड़ा सा ज़्यादा आपको you need to write. तो ये जो एग्जाम्स हुए थे ऑब्वियसली दिस आर 2000 दिस इज नवंबर 2019, दैट मींस ये जो एग्जाम था ये ऑफलाइन हुआ था। जो पहले जिस तरीके से एग्जाम्स होते थे ये उसका क्वेश्चन पेपर है और ये डीयू का ही क्वेश्चन पेपर है, राइट? दिस इज AECC डीयू का क्वेश्चन पेपर. सो दिस इज एग्जैक्टली द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर दैट यू वुड बी एनकाउंटरिंग इन योर एग्जाम. अबाउट रिपोर्ट राइटिंग जो मैंने लास्ट टाइम कराया था शॉर्ट रिपोर्ट मैंने आपको करा दी थी, इसमें सॉलिसिटेड अनसॉलिसिटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, बट एक उसमें लॉन्ग रिपोर्ट था. आई चेक्ड द लेटेस्ट सिलेबस और अभी जो लेटेस्ट सिलेबस है उसमें लॉन्ग रिपोर्ट नॉट इंक्लूडेड. आपको यू डोंट हैव टू बॉदर विद लॉन्ग रिपोर्ट्स नाउ. लॉन्ग रिपोर्ट पहले सिलेबस में था, इस बारी सारे बुक से मैंने देखा ACC की हट गया है, तो दैट इज कंसर्न. इट्स जस्ट दैट समझ सकते हैं कि शॉर्ट रिपोर्ट्स जैसे आप एग्जाम्स में लिखते हैं या आपको लिखने को मिलेंगे, उसके अलावा लॉन्ग रिपोर्ट्स हैं जो कि एक इंसान नहीं पूरी कमेटी मिलकर बनाती है, उसको लंबा टाइम लगता है, वो एक बुक के फॉर्म में या एक बड़े डिस्कोर्स के फॉर्म में होती है, थिंग लाइक दिस. ओके, सो this is your question paper. Answer, you have to answer all questions. Questions के अंदर आपको कुछ choice मिल सकती है. Like first question, you will find a choice. Second, you have to attempt all the questions. Read the passage carefully and answer the questions that follow. This is your simple comprehension passage. जैसे आपको comprehension passages आते थे, वैसे ही आपका यहाँ पे आपकी comprehending power देख रहे हैं कि आप इंग्लिश को कितना समझ पाते हो. I'll read one passage to you. एक मैं आपको पढ़ के सॉल्व करके बता दूंगी. नेक्स्ट वी कैन स्किप क्योंकि ये आपको टोटली आंसर पैसेज आएगा. So I think both are not required. One I can read out to you and we can we can solve the questions together. Like the second one that we do is skip the first question. The old man pressed his granddaughter's face against his chest. Quiet, he whispered urgently. Don't move. If you do, we are lost. So the very opening of the passage shows you that this is a situation of, this is some emergency situation. It's not a normal situation that some person is a grandfather, he's an old man and he's pressing his granddaughter's face against his own chest and saying, quiet, don't move or we are lost. So we understand that this must be a very difficult situation that they're in, maybe a life-death situation. The mob came rushing down the road shouting slogans. There is a mob. What is a mob? A mob is a large group of people. They came rushing down the road shouting slogans. So something political is happening maybe. The old man drew his arm protectively around the little girl's shoulders. Don't cry, he whispered. They will not find us here. So we also know that they're hiding. They're trying to hide from the crowd and trying to escape somehow. Suddenly, someone kicked the door open. It banged against the cement wall. So there was a cement wall, and when the door flung open, it's banged against the cement wall. Framed in the open doorway against a red light stood two men. Behind them, houses burned, and the sky was thick with snow. Can you see anyone? asked the shorter one of the two. Not yet, was the reply. The torch flashed. Now they're trying to find that, they're looking, they have a torch, they have some flashlight, and they are trying to look into the house. It's being pierced the semi-darkness of the shed. So they are in a shed. Now we realize that they are in a sort of a shed. The old man shrank back against the stacks of firewood, hoping that the empty drums in front would hide them from the searching light.
Eyes wide with terror, he watched the light sweep over the piles of wood, probing the piles of charcoal. Drawing closer and closer, the powerful beam hit him in the eyes. His eyes caught the face of the tall, dark man. For a moment their eyes met and held. He knew the man, he knew him very well. His neighbor's son, his friend. Now, this is a moment of revelation. यहाँ पे कुछ रिवील हो रहा है कि जो उनको शायद मारने आ रहे हैं उनमें से एक आदमी उसको वो फेस टू फेस देखता है एंड ही रियलाइजेस कि वो तो जाना पहचाना ही लड़का है कौन नेबर का बेटा पड़ोसी का बेटा अक्सर ऐसा हो जाता है कि कई बारी जब झगड़े फसाद होते हैं तो हम लोग के आसपास के जो लोग होते हैं जिनको हमने अपना वेल विशर अपना फ्रेंड समझा होता है वही आकर हमको दगा दे देते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो कि creates all the more terror, right? Okay, his friend. So he thought he was his friend, but that didn't seem to matter. Not now, not anymore. What mattered now was religion. Now we understand कि ये जो problem here, this is like a religious sort of fight or some sort of riot that is happening. To share the same belief in the same God. Now, what is the point? ये सारा झगड़े का क्या फसाद है कि एक ही भगवान को मानो और एक ही चीज में विश्वास रखो. The old man closed his eyes and turned his face away, trapped, caught, too late to run. So he realized that it was too late to run, too late to even pray, too late for anything. It was time to die. Do you see anything? The shorter man pushed past. Is anybody inside? The old man held his breath, with his eyes shut, his heart thumping wildly under his stained shirt. उसकी जो sweat stain की shirt थी उसके नीचे उसका heart जो था वो बहुत तेजी से thump कर रहा था. He waited after what seemed an eternity और ऐसा लगा कि पूरी eternity मतलब अनगिनत time, no? ऐसा क्योंकि जब आप किसी अच्छे मूड में होते हैं कोई अच्छी सिचुएशन में होते हैं तो टाइम ऐसा लगता है कि जल्दी 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 उड़ रहा है. दैट इज व्हाट वी से ना इन इंग्लिश टाइम फ्लाइज. जब हम किसी बैड सिचुएशन में होते हैं तो ऐसा लगता है कि टाइम गुजर ही नहीं रहा है. तो यहाँ पे इतनी लाइफ एंड डेथ इतनी बड़ी सिचुएशन थी. इट सीम लाइक इटर्निटी कि टाइम चल ही नहीं रहा है आगे पर ऐसा लगा इटर्निटी के बाद पूरा infinite टाइम के बाद the tall man's words reached him. They came from far away. No, let's go. There is nobody here. And the shed plunged into darkness once again. So finally we realized that he's actually a friend. हालांकि वो there's a religious fight or there is some religious struggle, but उसके बावजूद इंसानियत लोगों में इस तरीके से when you know somebody जो आपका नेबर है फ्रेंड है तो वो उसके बारे में उसको दगा शायद एडविन नहीं दे पाया. तो उसने अपने साथी से कहा कि यहाँ पर कोई नहीं है आओ चलते हैं. तो एक तरीके से उसने बूढ़े और उसकी ग्रैंड डॉटर को बचा लिया. सो यू हैव टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ द whatever the passage that is given to you. Usually it's easy but थोड़ा सा वो ऐसे कुछ in between मतलब वो एक पूरी स्टोरी नहीं सुनेंगे आपको बीच का एक सीन टाइप का दे देंगे and you will have to try to grasp the meaning. At the beginning, quickly through the questions. At the beginning of the story, what makes the old man feel he and his granddaughter are safe? So what do you think? कि starting में story के क्यों the old man and the granddaughter, why do they feel safe? Because they are in a shed and they are in a closed room and they are holding their breath and they're quiet. So they think that perhaps the mob will pass, or they have given you a second choice. How does the old man comfort his granddaughter? This is easier. वो उसको कहते हैं चुप हो जाओ सब ठीक हो जाएगा. That is you can in your own words you can sort of summarize what he said to his granddaughter. In your own words describe the atmosphere of fear in the story above. So इसमें थोड़ा आपको अपनी creativity लगानी पड़ेगी. How you will explain the atmosphere of fear कि बाहर ये crowd है वो जा रहे हैं कुछ religious tension है right और वो अंदर बैठे हुए हैं एक बूढ़ा इंसान अपनी ग्रैंडडॉटर के साथ all of that. So this is just to test your grammar and your English how well you write. What is the significance of the red sky, burning houses and a sky that was thick with smoke? ये क्या signify करता है कि there is violence, right? कि आग लगी है. Red sky मतलब कि जो नीला आकाश होता है इतना मारामारी है इतना आगजनी है कि the sky has sort of become red. There are burning houses and thick with smoke.
Why does the old man not feel any relief when he recognizes his best friend who is also his neighbors? उसको क्यों नहीं? Because he does not feel any relief because he thinks that he's from a different religion and therefore now he has become an enemy and would tell on him, that he would reveal their identity, he would rat them out. What is the significance of the last paragraph? What is this? What does it suggest about human relations? Significance of the last paragraph ये है कि आपकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है पर फिर भी इंसानियत नाम की चीज कुछ होती है. ह्यूमन रिलेशंस के बारे में ये क्या बताता है कि जब आप किसी को नहीं जानते है ना, जब आप कोई पर्टिकुलर इंसान को नहीं जानते तो उसको बुरा भला कहना, उसको मारना इजी हो जाता है. पर अगर आप किसी इंसान को के साथ रह चुके हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, आप उसकी इंसानियत जान जाते हैं, फिर उसको मारना, उसको परेशान करना, उसके साथ बुरा करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. दिस इज व्हाट वी केम टू नो बिकॉज ही वाज देयर टू किल, राइट. उसको कोई ऐसा इंसान मिल जाता जो दूसरे रिलीजन का होता, जो जिसको वो नहीं जानता, तो वो उसके लिए इजी हो जाता कि उसको मार पाता. पर जब हम किसी को जानते हैं, समझते हैं, जब जब किसी के साथ हमारा रिलेशन होता है, उठे बैठे होते हैं हम किसी के साथ, तो उस इंसान को मारना, परेशान करना, दुख देना ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारी इंसानियत उसके लिए जान जाती है. हम उसको इंसान की तरह देखते हैं इससे पहले कि हम उसका रिलीजन देखें. Use any 5 of the words given to write a descriptive paragraph of 50 to 100 words. 50 to 80 words. आपको ये mob, light, eyes, charcoal. So this is exactly what you have in the passage. पर आपको इन words को इनमें से 5 words को use करके descriptive passage लिखना है. पर आपको जो डिस्क्रिप्टिव पैसेज वो दिया उसको समराइज नहीं करना है. ओके, सो दे जस्ट टोल्ड यू टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैसेज, दे हैव नॉट टोल्ड यू टू समराइज और पैराफ्रेज द अबव गिवन paragraph. So you have to read the questions very carefully before you answer, before you say anything. So you have to give 5 words and describe whatever. So you can make up a story of your own. Here you don't have to. अगर उन्होंने कहा होता कि समराइज करना है या पैराफ्रेज करो, तो आप पैराफ्रेज करते या समराइज करते अकॉर्डिंगली. एंड 50 to 80 words means 50 to 80 words. Don't take it beyond that. And it will be nice if you mention the number of words that you have used. If you know, if you have time, count the words and write down number of words is equal to this much. अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये तो आपका पहला बिल्कुल इट वाज कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज. जो आपका सेकंड पैसेज है ये भी अनसीन पैसेज है, पर इसमें से जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे सिलेबस में से आएंगे. आपको ऐसी चीजें पूछी जाएंगी जो कि सिलेबस में थी. तो लेट अस फर्स्ट रीड दिस पैसेज एंड देन वी मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स. Veena had been going to school in her own village of Koli on the other side of the mountains, but it had been a primary school finishing at class 5. Now, in order to study in the 6th, she would have to walk several miles every day to Naughty, where there was a high school going up to the 8th. It had been decided that soon her younger brother would shift to the new school to give Veena company. Prakash, their neighbor in Koli, was already a pupil at the Naughty school. Children spoke often about the fun they would have while walking to and fro. Now we realize that this is about a village, Koli, where this girl probably resides, Veena, and now that she has passed class 5, she has to go to a different school for higher education to the 8th standard. That school is still the 8th standard, and they are talking about their journey, how great and what fun it would be that they would go to and fro. Prakash had a mischievous nature which sometimes got him into trouble and had resulted in his having to repeat a year, but this didn't seem to bother him. What's the hurry? He shrugged as he spoke. So shrugging is this, when you do this with your shoulder. What is the hurry? His tone careless and carefree, he had told his indignant parents, "You're not sending me to a foreign land when I finish school, and our cows aren't running away, are they?"
He was still angry about what he had said, but his voice rose in abusement as he told Veena about the conversation. So he was telling that he had failed one class and he was repeating, but he was very, uh, he was just not bothered about it. He was very careless about the fact that he had failed one uh, year. You would prefer to look after the cows, wouldn't you? Asked Veena seriously, with concern in her eyes as they got up to continue their walk. Oh, school's all right, but there's more to life. Hey, do you know there's a new teacher this year, Miss Ramola? She's very young, they say, just out of college. Everyone is in school is talking about her. I wonder what she'll be like. Veena looked up, excited in this new at this new piece of information. Her eyes shone as she thought about all the questions she would ask, all the things she might learn. Veena walked faster, and Sonu had some trouble in keeping up with them. She took his hand and helped him along. Walking close to him, her head on his shoulder, she was thrilled at the new school and the prospect of different surroundings. She had seldom been outside her own village, with its small school and single ration shop. The day's routine never varied, helping her mother in the fields or with household tasks like fetching water from the spring or cutting grass and fodder for the cattle. Her father, who was a soldier, was away for 9 months in the year, and Sumu was still too small for heavier tasks. As they neared Naughty Village, they were joined by other children coming from different directions. Even where there were no major roads, the mountains were full of little lanes and shortcuts, like a game of snakes and ladders. These narrow paths zigzagged around the hills and villages, cutting through the fields and crossing narrow ravines. Ravine is like a I mean, it's a sharp inclination of inclined ground until they came together to form a fairly busy road along with which mules, cattle, goats joined the throng. So this is about children going to school. Now you have questions here that you need to answer based upon what you have learned in the whole syllabus of yours. Just if पहला question is find examples of non-verbal communication in the passage. इसके लिए you have to recall what verbal communication is like and what non-verbal communication. So here you will try to figure out where non-verbal communication is happening, like shrugging of the shoulders. मतलब मुझे तो ये याद आ रहा है कि there is one place where somebody shrugged the shoulders. And so non-verbal communication is not written, not oral. It is by gestures and movements. All of that is nonverbal communication. Find examples of effective communication by the pitch of the voice in the speech. So you remember we had done pitch of the voice in the speech, and where the pitch rises and falls, you have to figure out from the passage. Where do we find feedback? Where somebody is replying to another person, that is feedback. So when probably both the little girl and the boy are talking, when they are replying, that is feedback. Or even looking with amazement, or even like having a facial expression that answers somebody's question or answers to somebody's statement, that will be called as feedback. Listening is as important as speaking. List examples from the above passage to show that children are alert listeners. Children are alert listeners because this girl is listening to that little boy very attentively, and whatever her expression has been shown, that she is full of amazement about the new school and what the teacher would be like and the new friends that she would make. That is all an example of why listening is important, uh, um, as important as speaking. And the example that you can give is that the girl is listening very attentively, and in her imagination she is also drawing a picture of what the school would be like, what the teachers would be like, and what fun they would have. Define grapevine and locate relevant examples in the passage. Now, what is grapevine? You already did what grapevine was. Grapevine communication is non-formal communication, or it is informal communication that you would do. That happens. So, in the passage, all the communication that is happening between the two of them, the two kids, is informal communication. It is just chatting about. So that is the passage itself. You can mention any sort of conversation that is happening. It's all grapevine.
Define social space and locate relevant social space. I had taught you in the very first classes that there is a private space, then there is a social space, then there is a public space. What is this space? You have to figure out. Semantic noise is defined as a barrier that is generated within a message and is caused by factors such as limited vocabulary, cultural differences, blocked categories. Find an example of semantic noise in the passage and explain why you think it occurs. Semantic noise कहाँ पे हुई है? This is a very tricky question. हालांकि आपको choice है. Semantic noise वहाँ हुई है जहाँ पे जो ये लड़का है इसको actually प्रकाश है शायद इसका नाम, he doesn't even know the meaning of feeling, and his parents are probably trying to communicate to him that he has failed and it's a bad thing or whatever, but he doesn't understand. He did not, so effective communication did not take place between his parents and Prakash, that he still doesn't really understand the meaning of feeling, or what happens when he does not study, because he is just not concerned. Then the 7 C's of effective communication, they are completeness, conciseness, concentration, clarity, completeness, courtesy, correctness. ये आपको पूछा भी जा सकता है, यहाँ पर इन्होंने लिख के दे रखा है. Find examples of any 3 of these in the passage above. तो completeness, conciseness, clarity, concreteness, courtesy, correctness, ये आप ऊपर passage में कहाँ आप find कर रहे हैं. Answer any 2 of the 4 questions below based on the passage above. कोई भी 2 questions को आपको answer करना है. Imagine that you are a reporter sent to the village to interview the children Beena, Sonu and Prakash about the hardships they face as rural. Now you understood from the passage कि ये जो बच्चे हैं ये किसी गांव में रहते हैं जैसे प्राइमरी स्कूल है, and there is no secondary school. Secondary school के लिए उनको 8th class के लिए उनको दूसरे विलेज नौटी जाना पड़ता है अपने विलेज को छोड़ के. तो आपको इमेजिन करना है कि आप एक रिपोर्टर हैं जो विलेज गए हैं और इन बच्चों को इंटरव्यू करने के लिए आपको भेजा है. किस बारे में? द हार्डशिप्स दे फेस, जो वो कठिनाइयां फेस करते हैं एज रूरल स्टूडेंट्स, जो वो गांव के बच्चे कठिनाइयां एज रूरल स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं. राइट एन इंटरव्यू बेस्ड ऑन द, अब आप इंटरव्यू को कैसे लिखेंगे? एक डायलॉग की तरह कि इंटरव्यूअर कोलन, you'll write the whatever line and then you'll write Beena Prakash. तो आप एक imagine करेंगे conversation between the interviewer, उसमें कभी बीना बोलेगी, कभी सोनू बोलेगा, कभी प्रकाश बोलेगा, और इस तरीके से आप करीब करीब 1 या 2 पेज का आप एक according to your handwriting, according to the space that you're leaving, but उसमें पूरा relevant text शुरू से लेके end तक, उसमें beginning, उसका बॉडी और एंड हो जाना चाहिए. इंटरव्यू ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी पूछ लिया. तो स्टार्टिंग में आप पूछेंगे बच्चों के नाम, कि आप लोगों के क्या नाम हैं और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कहाँ जाते हैं पढ़ने, पहले कैसे पढ़ाई होती थी. फिर आप पूछेंगे कि स्कूल में आपको क्या प्रॉब्लम आती है, आप स्टूडेंट्स है, आपको कुछ ऐसा लगता है कि शायद अगर आप शहर में होते तो बेटर होता, कितना आपको चलना पड़ता है, और आप उसको कोई भी एक व्यू पॉइंट दे सकते हैं. आप ऐसा भी दिखा सकते हैं कि बच्चों को तो बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि अभी उनको पता ही नहीं है कि इतना दूर, उनको हार्डशिप जैसा लगता ही नहीं है कि इतना दूर चलना, उनको ये दे कंसिडर इट फन. या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं, जैसे जो बीना है उसको समझ में आ रहा है कि इतना सारा घर का काम के साथ साथ अभी इतने दूर जाना पड़ेगा, वहाँ पे शायद फैसिलिटी नहीं होगी, टीचर्स बुरे होंगे. सो यू कैन इमेजिन ऑल ऑफ दैट. और एंड में आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहेंगे, आपका लोगों को क्या संदेश है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या डिमांड करना चाहेंगे, आप लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, ऑल ऑफ दैट, जैसे कि जनरली इंटरव्यूज होते हैं. तो यू कैन ऑल्सो रीड अ कपल ऑफ इंटरव्यूज, दैट विल गिव यू एन आइडिया. Second is you are a journalist who has been sent by your newspaper to interview Miss Ramola about the changes of teaching in a village based on the passage. So you can imagine कि कोई नई टीचर आई है और जो नई यंग टीचर होगी वो किस तरीके का एनवायरनमेंट पसंद करती होगी, क्या उसके नए क्या उसके चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या उसके जो नए मेथड्स है टीचिंग के, उसके हिसाब से
एक you have to imagine an interview with मिस रमोला. सो ये ज्यादा फॉर्मल इंटरव्यू होगा, जो ऊपर वाला था वो थोड़ा इनफॉर्मल इंटरव्यू होगा. If Beena and Prakash had a conversation about the importance of school education. अब आप देख रहे हैं कि बीना जो पैसेज पे थोड़ा सा मैं वापस जाती हूँ, और हमको बताया गया है पैसेज में कि जो प्रकाश है उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो फेल हो गया है. वो इस तरीके की बातें कर रहा है. वो कह रहा है व्हाट्स द हरी, राइट. यहाँ पे है ना, ये जो प्रकाश है, ये वाला जो आपका पैसेज है, प्रकाश का मिस्टीरियस नेचर है दिस, ओके, which sometimes got him into trouble and he had to repeat a year, but it did not seem to bother him. He said, what's the hurry? क्या इतनी जल्दी क्या है? He shrugged and spoke. Shrugging, his tone was careless, right? Carefree. So this is also a change of pitch. जो pitch वाला question पूछा था. He told his indignant parents. उसके parents बड़े गुस्सा थे, शर्मिंदा थे, उस पे नाराज थे, बट उसके इंडिग्नेंट पेरेंट्स को उसने बोला कि तो तुम कोई मुझको फॉरेन लैंग्वेज थोड़ी, कोई फॉरेन लैंड थोड़ी ना भेज रहे हो, यहाँ पे मुझे गाय तो देखनी है, गाय भाग थोड़ी ना रही है, फेल हो गया तो क्या हो गया. और बीना का क्या पर्सपेक्टिव है कि बीना उससे क्या क्वेश्चन पूछती है, ये सारी की सारी बात सुनने के बाद बीना उससे ये पूछती है कि तुम प्रेफर करोगे कि तुम गाय ही चराओ. मतलब बीना के कुछ और सपने हैं, वो पर्सनली ऐसा नहीं चाहती. वो उससे कहती है कि अच्छा तो तुम मतलब स्कूल खत्म करके तुम गाय चराना चाहते हो, क्योंकि तुम कह रहे हो कि गाय तो कहीं भाग नहीं रही है, आज अभी अभी चरा लूंगा, नहीं तो 1 साल बाद चरा लूंगा अपनी स्कूल एजुकेशन खत्म करके. तो ये बीना इसलिए पूछ रही है क्योंकि उसका जो शायद सपना है वो गाय चराने का नहीं है, राइट. वो कंसर्न के साथ पूछ रही थी, सीरियसली, कि क्या ये सच में इतना पढ़ लिखने के बाद भी गाय ही चराना चाहता है. नॉट दैट गाय चराना इज अ बैड थिंग, बट जब आपके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन होती है तो आप कुछ और काम कर सकते हैं, और ऐसा काम जो गाय चराने का जैसा काम है, जो कि प्रॉब्लली एक अनपढ़ इंसान नहीं कर सकता है, उसको आप उस इंसान के लिए छोड़ सकते हैं. तो आप एक एम्प्लॉयमेंट किसी ऐसे इंसान के लिए छोड़ रहे हैं जो बिना पढ़ाई के भी वो काम कर सकता है. अगर आपने पढ़ लिख लिया है तो आप यू आर रेडी फॉर अदर थिंग्स दैट अदर पीपल कैन नॉट डू. तो ये अब आप इमेजिन करिए कि ये कॉन्वर्सेशन हो बीना और प्रकाश के बीच में कि एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट. सो सॉरी, सो हाँ, ये रहा ना, विथ बीना एंड प्रकाश. तो बीना क्या बोलेगी, प्रकाश क्या बोलेगा. तो बीना, यू नो, यू विल जस्ट राइट बीना कोलन एंड देन यू कैन से कि don't you think that you can put your talents to other use after you have studied. Then Prakash would say nahi nahi, I like my life here, है ना, all of that. तो आप इसमें कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश में भी इस कॉन्वर्सेशन को कर सकते हैं if you want to. All right, इस तरीके से आप you have to, it's a 10-mark thing, so you have to create a whole conversation between the two. Then comes write a public speech about the benefits and necessity of affordable and easily available basic education, especially in rural areas. अब आपको speech writing है, public speech लिखनी है. Public speech को आप कैसे start करेंगे, my dear friends, या फिर ladies and gentlemen, या my dear brothers and sisters, attention please, something, I want to speak about this. Then you will write like a essay. ठीक है. Finally, you will directly address the public there. So you करके आप बात करेंगे. I am here to talk about the benefits and necessity of available and easily available basic education, especially in rural areas. You too must have often wondered about the subject, right? After, towards the end, towards the conclusion, you can say, so dear audience, dear citizens, dear fellow citizens, or you know, uh, my dear friends, I would like to conclude that we all as a society should do something towards. So you have to talk in the first person. I you करके आपको बात करनी है, जिससे आप डायरेक्टली किसी से बात करें. That is how speeches are prepared.
फिर आपको फिर से एक क्वेश्चन आता है पैसेज क्वेर। अब ये पैसेज मैं पढ़ नहीं रही हूँ, एक दो पैसेज मैंने आपको पढ़ दिए इसलिए, सो दैट यू नो यू हैव टू आइडिया। चीफ सीडल्स लेटर, राइट, सो दिस इज प्रोबेबली अबाउट अ लेटर। मैंने भी नहीं पढ़ा ये पैसेज क्या है, बट we'll try to look at the questions. Analyze the difference between the ideas of the white man and the native tribal people as seen through Chief Seattle's letter. Can you propose a middle path between contrasting view of how this earth should be used? So there is probably in the passage there is a conflict between, ऐसा होता भी है कि नेटिव जो ट्राइबल और नेटिव लोग होते हैं वो थोड़ा ज्यादा नेचर को रिस्पेक्ट करते हैं, और यूजुअली जो हम लोग मॉडर्नाइज्ड यहाँ पे वाइट मैन है, बट मॉडर्न इवन मॉडर्न सिविलाइजेशन हम लोग नेचर को एक कमोडिटी की तरह देखते हैं। तो देयर मस्ट बी अ डिफरेंस सीन थ्रू दिस लेटर, या जो आपको पैसेज दिया है उसको आपको पॉइंट आउट करना है। Chief Seagull wrote this letter 165 years ago using terms and a style that are not used in our time. अच्छा, ये probably इस स्टाइल में लिखा गया है जैसे पुराने, अब हर एक का लिखने का स्टाइल भी डिफरेंट होता है। पहले अगर आप देखेंगे कि आपने कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स अगर कभी पढ़े हैं तो आप देखेंगे उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज द अबव पैसेज in not more than 75 words in contemporary language and style. So according to how you use language now, you have to paraphrase it. Paraphrase का अगर आपको मीनिंग याद है तो paraphrase is not summary. आपको basically सारे के सारे points include करके इसका finally एक निचोड़ लिखना है in 75 words. So 75 words ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम है, तो you have to be very clever as to how you sort of shrink the whole passage in your own words into just 75 words. अब यहाँ पे expository writing calls for logical analysis. Using material from Chief Seagull's letter, write an expository. Expository ऐसे मतलब analytical essay, जहाँ पे आप काफी उसका analysis करें, जहाँ पे आप critically comment कर सकें किसी situation पे। तो आपको इस topic पर एक analytical essay लिखना है। Europeans or the white man's idea of development was completely different from that of the tribal people. जो white man है या जो civilized इंसान है उसका जो आइडिया होता है डेवलपमेंट का वो कम्प्लीटली डिफरेंट। उसके लिए क्या है डेवलपमेंट, कंक्रीट हो, ब्रिक्स हो, रोड्स हो, हाईवे बन जाए, ये सब डेवलपमेंट लगता है। पर डेवलपमेंट क्या है, आपकी सोच अच्छी हो, आप लोगों से अच्छे तरीके से बात कर सके, कम्युनिटी में साथ अच्छे से रह सके, आपके अंदर मानवीयता हो। ऑल ऑफ दैट इज प्रोबेबली डेवलपमेंट फ्रॉम और ट्राइबल्स पर्सपेक्टिव, राइट। उनके पास बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं होते हैं, पर उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब सुख सुविधा नहीं है, उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब शांति और चैन से और प्रेम से शायद जीना है। तो आपको एनालिसिस करके कि इनका क्या पर्सपेक्टिव, उनका क्या पर्सपेक्टिव, एक ऐसे लिखना है। बेस्ड ऑन दिस लेटर, what kind of a person do you think Chief Seagull is? How would you interpret his values and goals? उसके values और goals को आप interpret करेंगे। Answer the following question. Fifth question. The above passage is an extract from Chief Seagull's letter to the President of the United States. So Chief Seagull कोई शायद मिलिट्री के चीफ होगी, उन्होंने कोई प्रेसिडेंट को ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स यूएस के प्रेसिडेंट को कोई लेटर लिखा होगा। Based on this letter, write a letter from Chief Seagull to his children, in which he explains to them what will happen if their way of life, what will happen to their way of life once their land is gone. तो यहाँ पे शायद काफी एनवायरमेंटल कंसर्न्स रही होंगी इस पैसेज में। तो चीफ सीगल ने जब प्रेसिडेंट को लिखा है तो एक फॉर्मल लेटर लिखा है, पर जब चीफ सीगल अपने बच्चों को एक लेटर लिखेंगे तो उसकी टोन चेंज हो जाएगी, उसकी भाषा भी चेंज हो जाएगी। भाषा मतलब कैसे, जब आप बच्चों को कोई बात, आप अपने साथियों को कोई बात समझाते हैं और किसी छोटे 6 साल के 7 साल के बच्चे को समझाते हैं, उसमें एक डिफरेंस होता है। बच्चे को हर चीज सरल भाषा में और प्यार से और ऐसे एग्जाम्पल देके कि वो उसको समझ में आए, बच्चे की दुनिया से ही वो एग्जाम्पल देके उसको समझाना पड़ता है। तो आपकी भाषा चेंज हो जाएगी, आपकी टोन चेंज हो जाएगी। जो लेटर है वो इनफॉर्मल है, तो उसमें आप काफी अपने डियरनेस वाले वो भी यूज कर सकते हैं कि आप इधर उधर की बातें भी कर सकते हैं, और फिर फाइनली घूम फिर के मुद्दे पे आके you can beat about the bush and then you can come to the point, और फिर आप
ये लेटर लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. और there's a choice here. The President of the United States has asked you to do a survey of Chief Seal's tribal land to look at opportunities for development. Write a report on the findings of your survey. तो ये रिपोर्ट राइटिंग में आ जाएगा आपका. अगर आप इमेजिन करेंगे कि आपने एक सर्वे किया है जो चीफ सिविल के का जो ट्राइबल लैंड है उसमें, और फिर आपने प्रेसिडेंट को लेटर लिखना है कि उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है. आपके ओन रिकमेंडेशन भी उसमें डालना है कि क्या आपको वो लैंड खरीदना चाहिए या नहीं. सो इट्स अप टू यू कि अगर आप पर्सपेक्टिव वाइट मैन का रखना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि बिल्डिंग्स बनाना और रोड्स बनाना और हाईवेज बनाना वो भी इम्पोर्टेंट है, तो अगर आपको वो वाला पर्सपेक्टिव ज्यादा सही लग रहा है तो आप उस पर्सपेक्टिव से लिख सकते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए वाइट मैन के पर्सपेक्टिव. वरना आप सर्वे करके ये लिख सकते हैं कि यहाँ का जो लैंड है, एयर है, काफी अच्छी है, लोग काफी हार्मनी से रह रहे हैं और अपने में खुश हैं, और शायद हमको इनके इकोसिस्टम को शायद फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पर्सपेक्ट ऑल्सो इसको खराब नहीं करना चाहिए, इसको चेंज, इनको ऐसे ही रहने देना चाहिए. इट्स अप टू यू. टीचर आपको इस चीज पे जज नहीं करेगा कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. आपका पॉइंट ऑफ व्यू इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बट इट्स जस्ट दैट आपका लैंग्वेज सही होनी चाहिए, ग्रामर सही होनी चाहिए, टोन सही होना चाहिए, पिच सही होना चाहिए, और ग्रामेटिकल और सिंटैक्टिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए, कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. बाकी आपका पर्सपेक्टिव है. लिटरेचर में स्पेशली जब आप कुछ लिख रहे होते हैं तो उसमें कोई सही या गलत नहीं होता है जब तक कि आप एक्सप्लेन कर सके क्यों. ओके, सो ये आपका 1 साल का पेपर था. अब आपका दूसरा पेपर आ जाता है. आंसर ऑल क्वेश्चंस. Read the passage carefully and answer the questions that follow. Right? तो ये पहला पैसेज तो वैसा ही पैसेज है कि ये completely आपका अनसीन पैसेज होगा. इसमें से आपको क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली. वो कितना आपको इंग्लिश की समझ है, कितना आप क्वेश्चन को समझ पाए हैं और कितना उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके हिसाब से यू हैव टू आंसर. इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. हाउ डिड हेलन केलर कम्युनिकेट विद हर फैमिली शी व्हेन शी वाज टॉट बाय हर टीचर. तो ये आपको उसमें से ढूंढना है कि हेलन केलर की स्टोरी कई लोगों को पता होगी. What does the verb talk in the fourth sentence of this message mean? Fourth sentence में कहीं पे talk लिखा हुआ है, उसका meaning कुछ और होगा, हम देख सकते हैं. She made up signs with her hands so she could talk. Talk का मतलब communicate, right? She's not actually talking, but she is communicating. Because she was blind and she could not hear. So she was deaf and blind, and she tried to communicate using her hands. Do you think Helen had a supportive family? Why? So how do you think, if yes, why? If no, why? So you have to see from the passage if Helen Keller had a supportive family, उसकी family उसको support करती थी. How did Helen's teacher teach her to write her first word? This again from the passage you can find out. Is Helen's story inspirational? Explain why. Obviously it's inspirational. मतलब अगर आपको नहीं लगे होगी you can say that, but usually people find it inspirational. What do we learn from reading about Helen's life? So these are fairly simple questions, right? Short sentences using 5 of the following words: science, family, teacher, blind. So you have to create sentences. Teacher, deaf, dumb, all of that. Or like deaf. Okay. Then you have a passage again. This is a song by the Beatles, When I'm 64 by the Beatles. The Beatles were an English rock band formed in the 1960s. They are often regarded as the most influential band of all time. This is one of their songs. It has been shortened for your exam. When I get older, losing my hair many years from now, when you, sorry, this is Will. Will you still be sending me a Valentine birthday greeting bottles of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you sail, feed me? Will you still, this is still,
When I'm 64, you will be older too. And if you say the word, I could stay with you, I could be handy mending a fuse. When your lights have gone, you can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings, go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Send me a postcard, drop a line stating point of view. So this is just give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Give one example of written communication mentioned in the first passage. Give one example of non-verbal communication. So non-verbal again, आपको पिछले वाली. In paragraph 3, the poet is asking for feedback. What is the feedback? Will she do certain things or not? Will that girl or boy do certain? What does the poet say he will do once he receives feedback in paragraph 3? In the process of communication, the first the sender writes a message and the receiver decodes the message. After the receiver has given feedback to the sender, which part of the process of communication do we see in the passage above? इसमें क्या आप डिकोडिंग देख रखे हैं या एनकोडिंग देख रखे हैं या फीडबैक देख रहे हैं या क्या देख रहे हैं? वो जो कम्युनिकेशन साइकिल थी उसके जो पार्ट्स थे, राइट, हाउ इट हैपेंस, उसमें से ये कौन सा चल रहा है. और फिर हमने इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन भी सीखा था कि गिव एन एग्जांपल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन in the passage when two people are talking, right? When intrapersonal is when you're talking to yourself, interpersonal when two people are, and you have to also explain. So first will have to explain what interpersonal communication is, then you'll say therefore this is an example of interpersonal communication. In the last two paragraphs there are several examples of the written format of communication. Give at least one example. Written communication can either be formal or informal. Which one do we see? So what is this? This is an informal communication because poetry almost always is informal communication. Poetry कभी formal होती ही नहीं है. So if it's poetry, you will say that it is informal communication. Answer any two of the following. So first is your dialogue writing. Second is your interview. Write a short dialogue between the poet and the person that he is writing this passage to. So you can, ये तो poetry के form में दिया हुआ है, अब आपको इसको dialogue के form में देना है. You are writing an article on relationships for your peer review you are sent to interview. Okay, basically you have to interview the poet and you have to write a short interview with the poet in which you ask him question about what he thinks is important for grounding good. So he's just talking about relationships, so you have to imagine an interview and what you'd ask the poet. Imagine the poet is your friend, write a short dialogue. Now this dialogue, when you write an interview it's formal, when you write a dialogue it's informal. उसमें आप कोड स्विचिंग कोड मिक्सिंग कर सकते हैं, उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे. बाय द वे, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन. Write a brief public speech. Public speech भी आपको आती है, made by a senior citizen of your committee about what how they live their life after retirement. This is easy. Then read the dreams. There is this person called Langston Hughes, and he is an American poet. He was an American poet during the 1920s, and he has written these 1, 2, 3, 4, 5 lines. This is a 5-line poem, very small. Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken winged bird that cannot fly. Right? Hold fast to dreams, for when dreams go, life is a barren field frozen with snow. So answer 2 of the 4 questions. Write a paraphrase of the poem. Explain the poem in your own words. Paraphrase मतलब पूरी poem in your own words. सारे points included. तो ये poem कितनी 4-5 lines की है, but आपको paraphrase क्योंकि 10 marks का मिला है तो आप अच्छे से explain करेंगे point by point. You have to paraphrase everything. हर एक line जो आप जिस तरीके से समझते हैं उसको explain करेंगे. After close reading भी मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है. Of the first verse of the poem, explain the following words or phrases. Dreams क्या होती हैं? Dream का मतलब यहाँ पे क्या है? Ambition.
Dreams die, matlab dreams actually don't die. Dreams aren't living things that they die. But when dreams actually are shattered. And what is a broken winged bird? A broken winged bird is when you have probably lost your particular ambition or you could not achieve something, then the sort of disability that you feel, that can be compared to a broken winged bird. Summarize the main idea of the poem. What happens when dreams die? So this is a very small thing, but you have to explain this small idea, and that is where your skill will show. Interpret the second verse. uh, why does the poet compare life to a barren field that is frozen with snow, right? When your dreams die, it becomes a barren field frozen with snow. This you have to explain. Answer one of the two questions below. You want to be a singer, but your father wants you to study engineering. Write a letter to your father describing the ideas of the poem. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पोएम से लेकर आइडियाज की जो पोएम में कहा गया है वही बात आपको लेटर की तरह, एक लेटर की तरह अपने फादर को लिखना है और उनको एक्सप्लेन करना है कि क्यों आप सिंगर बनना चाहते हैं और आपकी ड्रीम्स शायद मर जाएंगी और आप अच्छा नहीं कर पाएंगे. यू विल बी लाइक अ ब्रोकन बर्ड इफ यू स्टडी इंजीनियरिंग इंस्टेड. एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रीमिंग एज एंड द रिजल्ट ऑफ ब्रोकन ड्रीम्स. ब्रोकन ड्रीम से क्या हो सकता है? So in your own imploring sort of a way, you can explain, or in your own endearing way, you can explain to your father why you think dreams are important and what will happen if your dreams would die. Then finally, this poem warns us about the dangers of broken dreams. Write a report for your English class about these warnings. Okay, think about it. ये बड़ा easy लगता है कि ये जो questions हैं ये you do them easily, but they're not easy to do. If you try, if you practice, you'd probably get it, but otherwise it's not an easy task. So please इनको ध्यान में रखिए. And this is how your question paper will appear. This is what it will look like. Any questions that you need to ask me, this is your final sort of class or your session with me. Anything जो आपको पूछना है, कुछ कहना है, कुछ बताना है, कुछ सुनना है, कोई doubt है, you can very well ask me. No? Nothing you want to ask, nothing you want to say? So I have finished your syllabus. इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं. ऑल्सो मैंने आपको ये रिपीट किया है कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना ही पढ़िए फॉर योर एग्जाम. एक्स्ट्रा बहुत SOL में दिया गया है, वो आपके रेफरेंस के लिए है, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा, पर वो एग्जाम में नहीं आएगा. तो strictly stick to what I have taught you. Okay guys, all the best for your exams. I think we can end this session here because you guys do not have any questions to ask. You can even in the chat box, if you want, you can ask me any questions that you'd like to. If not, then we can end with this session. Anything? Okay guys, then I'll see you. Now I won't see you, but all the best for you guys. Thank you.